Hello students, today we are going to discuss on our fourth practical and the name of the practical is differentiation. So what is meant by differentiation? Before to learn this concept you have to clear few basic concepts regarding differentiation. See, there are different kinds of terms or branches in mathematics: discrete mathematics, differential mathematics, calculus mathematics, algebra of mathematics. So, from this chapter or before this chapter, there are few concepts which are included in calculus. So, what is meant by calculus? Let us see. See, in front of you there is earth, and change is the only constant thing in the world. You know that? Everything will be changing day by day. Now see, calculus is involved in everywhere in human life. In our day-to-day life, you can see calculus everywhere. So let us talk about first of all. So what is meant by calculus and how it works in our day-to-day life? To solve society problem, we can easily find some science also in our society. There is few term or few parts as like economics, psychology, sociology, geology. All these fields covered by calculus. So see, if you want to swim, then the displacement in meter of a swimmer named was swimming in Olympic size pool in a straight line from point A to point B by the given equation of motion. So we have function in the form of equation, and our function s is equal to f of t here, which is equal to 4t cube plus 3t plus 10, where t is measured in second. So at that time, displacement, rate of change of displacement with respective time, you can find out in physics. Now see, what is this? This is a star, this is astronomy. So to calculate position of the star, you can use calculus. To find out speed under space travel, you can find out calculus again. Automobiles, see, under automobiles, see, in a vehicle, use of differentiation in odometer and speedometer. In front of you there is, maybe it is bike, maybe it is car, maybe it is plane. In automobiles there is always a odometer and speedometer. So these two gauges works in tandem and allow to determine his speed and his distance that he has traveled. So electronic version of these gauges simply use derivatives to transform the data sent to the electronic motherboard from tires to mile per hour and distance. Isn't it? Use of differentiation or calculus in automobile section. Now see, radar guns. So when a radar gun is pointed and fired at your car on the highway, the gun is able to determine the speed and distance at which the radar was able to hide the certain sections of your vehicles. See, under chemistry also this is involved. How it works? When you are find out boiling point and melting point, then you can usually use calculus here. See, the temperature at which solid changes into liquid. See, rate of change of temperature with respective time. अगर मैं कोई वाटर को बॉईल करती हूँ, कोई एसिड को बॉईल करती हूँ, तो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन जो रहता है वो क्या रहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्टिव टाइम. तो जितना टाइम पीरियड मैंने बढ़ाया उतना उसका टेम्परेचर बढ़ेगा. सब सी, थर्मोडाइनमिक्स, हॉट टू कोल्ड. इफ आई वांट टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गिवन वाटर, हॉट वाटर, say again,
it is depends on only time. So rate of change of temperature with respective time, here we can use navigation to find out longitude. Now see buildings, इसमें भी हम यूज़ करते हैं डेरिवेटिव्स का टू फाइंड आउट हाइट, टू फाइंड आउट डिस्टेंस, टू फाइंड आउट टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड में ये कंप्लीट होंगे प्रोजेक्ट्स, एज लाइक दिस. See in engineering again, to make robots you have to use calculus, you have to use differentiation and parts of calculus. So calculus in engineering field, again to make system design we can use. Now see in biology, see there is skeleton of our body. To study the interactions of different species within the ecosystem, calculus is used here. Now the concentration of drugs in a living organism can be answered with calculus. Again the physical attributes such as backbones, length and skull length measured by calculus. So calculus is used for measuring growth rate of bacteria and certain species here. Understood? So biologists use differential calculus to determine the exact rate of growth in a bacterial culture when different variables such as temperature and food source are changed. So with respect to temperature and with respect to food source, you can calculate rate of growth of bacteria, isn't it here? See now in biology again, rate of change of height with respect to time. crop, आज अगर मेरा पौधा मैंने लगाया है तो 10 दिन बाद, 15 डेज, आफ्टर 20 डेज, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स उसका जो हाइट है वो इंक्रीज होगा डे बाय डे. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो दिस इज द डिफरेंस ट्री. And after some time, so what is dh? Dh is nothing but slight increment in height with respect to particular slight changes in time. Got it? Calculus in economics. See economics का part क्या है? Profit, loss. कोई भी कंट्री है, कोई भी कंट्री प्रॉफिट में है, लॉस में है, देन कोई भी कंट्री का ग्रोथ रेट रहता है. ग्रोथ रेट जो रहता है वो डिपेंड्स रहता है कि कितना कंट्री में सब कुछ अच्छा चल रहा है. अभी फिलहाल लास्ट ईयर से सब कुछ हमारा डिस्टर्ब हो गया है ड्यू टू कोरोना. ओके, सो यहाँ पे जो रहता है कैलकुलस रहता है इकोनॉमी में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ demand with respect to time, rate of change of demand with respect to supply, rate of change of supply with respect to demand, profit with respect to loss. ये सब जो पार्ट्स है ये इकोनॉमिक्स के पार्ट्स है. सी क्रेडिट कार्ड कंपनीज जनरली यूज कैलकुलस टू फाइंड आउट कैलकुलेशंस. See under economics, see average revenue is a part of commerce and it is used in differentiation. The average revenue received per item sold, it is equal to total revenue divided by quantity. It is a part of economics. So in economics also we can use calculus. Marginal revenue is again the part of calculus and it is used in economics. As now see applications of derivatives in various fields. We have seen, you have seen somewhere this thing. याद आया कुछ? What is mean by velocity? What is mean by displacement? What is mean by acceleration? कहाँ गए हम? फिजिक्स में. So rate of change of displacement with respect to time is nothing but velocity, and rate of change of velocity with respect to time, it is nothing but acceleration. ये सबको पता है. And this is the part of differentiation. देखते हैं कैसे. So डेरिवेटिव का यूज़ अब हमें आगे देखना है कि how to find out डेरिवेटिव, how to use डेरिवेटिव in our lives.
तो इन रियल लाइफ डेरिवेटिव कैन बी यूज इन साइंस, इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल एक्सेट्रा. वी हैव सीन दिस. See, this is the graph to represent rate of change of demand with respect to price. क्वांटिटी एंड प्राइस का ग्राफ दिया है. डिमांड प्राइस का भी ग्राफ आप ले सकते हो डेरिवेटिव में. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस. गोल्ड है. गोल्ड अगर मेरा 20,000 था तो वो हम ले सकते थे, बट अभी गोल्ड 50 क्रॉस किया तो गोल्ड का डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ derivative. Rate of change of price with respect to demand. Rate of change of demand with respect to price. So in mathematics, calculus is very important, and this concept was developed by so many mathematicians. Among them there are few names. Bcino is the first Italian philosopher who develops limits. See, limit is the foundation of calculus. Limits is the ground floor of our building of calculus. So limit is ground floor, differentiation is first floor, integration is second floor, and after that application of derivative and application of integration you have to learn. So see, except Zeno, again Isaac Newton and Gottfried Leibniz developed calculus independently, especially in differential calculus. So see, this is now your syllabus part. Now come towards mathematics. In your syllabus there is limits, there is continuity, there is derivatives, there is application of derivatives. In commerce especially they have been given, and integration and application of integration you are going to learn in 12th standard. So all these are parts of calculus. So before starting derivatives you have to know information about limits and continuity. Okay, now see, in short, let us see what is meant by derivative. What is meant by derivative? Rate of change of displacement with respect to time. So how to write this? Suppose I have displacement s and I want to find out velocity. So how to find out this? By using ds by dt you can find out, and this is nothing but velocity. Then rate of change of velocity with respect to time. What is meant by this? Acceleration. S is nothing but displacement. Okay, now see, derivative. Differentiation is the part of derivative, and it is, what is it? It is the process which is done on a function. जो भी हमने अब तक फंक्शन चैप्टर में फंक्शंस पढ़े हैं, कौन से फंक्शंस? लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, लीनियर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, all trigonometric functions, inverse of trigonometric functions. तो लिएट, in simple way I have to say that लिएट, जो लिएट है वो लिएट में जितने भी फंक्शंस है उसके ऊपर आपको डिफ्रेंसिएशन को लर्न करना है इन मैथमेटिक्स फॉर योर 11th स्टैंडर्ड. Now see, the process which is done on a function to obtain a derivative is called as differentiation. जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, सपोज मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आई वांट टू फाइंड आउट वेलोसिटी, तो दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन. इस पे हमने प्रोसेस किया, तो डेरिवेटिव का ही पार्ट डिफरेंशिएशन है. इट इज अ प्रोसेस विच इज डन ऑन अ फंक्शन टू ऑब्टेन द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. एंड हाउ टू राइट दिस? सी, फंक्शन को इन जनरल वे हम ऐसे लिखते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. गॉट इट? हियर x इज इनपुट, आई टोल्ड यू, एंड y इज आउटपुट. ओके, फंक्शन में मैंने ऐसे बोला था. यू कैन से दैट एज लाइक दिस अगेन.
if you have y equal to f of x, then what is mean by derivative? Derivative is nothing but rate of change of one variable with respect to another variable. In place of variable, you can take anything. You can take temperature, you can take demand, you can take supply, you can take values, particular values of functions, isn't it? So function, this is the symbolic form of function. Here we cancellate. So f y equal to f of x be the function here. Then how to write derivative? This is the derivative. Representation of derivative is in the form of dy by dx. अब ये कैसे आता है? How it becomes? So see, under this derivative there are two terms, independent variable and dependent variable. Independent variable and dependent variable. See, if I have function y equal to f of x, here x is input, so independent variable कौन सा रहेगा? x. एंड डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा रहेगा? y. इट मीन्स अगर मैंने मेरे x के वैल्यूज़ लिए तो ही मुझे y मिलता है फंक्शन में. तो x को मैं इनपुट अगर बोलती हूँ तो उसको मैं उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकती हूँ, क्योंकि वैल्यूज़ उसके हम लेते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं. फंक्शन क्या हो या हम सेलेक्ट करते, मीन्स आपके जो टेक्स्ट बुक में फंक्शन दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ x, दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जो हम वैल्यू निकालते हैं y की, दैट इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल. सो y इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल हियर. Got it? Now see, this is the basic concept of this dy by dx, how it becomes. Now in mathematics, the derivative is a way to represent rate of change between any two quantities. Rate of change, see in front of you there is graph regarding change in x. If I want to change x, then you have to change y respectively. So अगर मैंने x के वैल्यूज चेंज किए तो करस्पॉन्डिंगली जो y है वो भी चेंज होगा. सो दैट्स ऑल अबाउट द स्लोप. तो डेरिवेटिव इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन और स्टडी ऑफ स्लोप. तो स्लोप आपने देखा है प्रायर, एवर हैव यू सीन? स्लोप इज नथिंग बट see, if I have values of x is 1, then I got y here. If I value of x is 2, I got here. If I have x is 3, then I got value of y here. So suppose this is time and this is temperature. So जैसे जैसे मैंने टाइम बढ़ाया वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ गया. सपोज हियर suppose here is demand and here is supply. so जैसे जैसे डिमांड बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई क्या होगा? बढ़ेगा. ओके, slope. How to find out slope? What is mean by slope? Suppose I have one line and there are 2 points x1 y1 here.
x2 y2 here. Okay, if I have this line and there are 2 points on that line, now can I find out slope? How to find out slope? By using Pythagoras. So to find out slope, we can write change in y over change in x, change in y with respect to values of x. So now see, here is again one example. In front of you there is a boy with cycling. Okay, अब यहाँ पे उसका जो रूट है, उसके पाथ जो रूट है वो दिया है, कैसे रूट वो ट्रैवल कर रहा है. सी यहाँ पे क्या है, हिल है, इट मूव्स, ही मूव्स टुवर्ड्स द हिल. नाउ सी, अगर ऐसा है तो यहाँ पे मुझे स्लोप निकालना है, तो क्या करते हैं हम, दिस इज माई कर्व, ये कर्व है ना. सो यहाँ पे Pythagoras, by using Pythagoras we have to find out value of this. You have to make a line which is passing through this curve. means suppose ऐसा कर्व है, हिल है, तो एक ऐसा लाइन हम खींचते हैं जिसको वो टच करती है वन पॉइंट में, कर्व को सिंगल पॉइंट में टच करके पास होती है. एंड देन वी हैव टू मेक ट्राइंगल एंड बाय पाइथा. सो सपोज मेरे पास एक लड़का है जो साइकिलिंग के लिए हिल्स पे जा रहा है. सो दिस इज, नाउ सी, अगर मुझे हिल्स पे जाना है साइकिलिंग के लिए तो कितने कंडीशंस, जो रूट है वो कैसे मिलेगा, लेट अस सी. ये है टुवर्ड्स हिल्स. सी नाउ वो हिल पे गया, एग्जैक्ट ऊपर वो जा रहा है. अब देखो यहाँ पे वैन वो यहाँ जाएगा, टॉप पे जाएगा, तब स्लोप क्या होगा, एनी गेसेस. जब वो स्लोप टुवर्ड्स हिल्स जा रहा है तब उसका स्लोप क्या होगा, ज़ीरो होगा. ज़ीरो होगा क्योंकि कोई भी डाउनवर्ड नहीं है, अपवर्ड नहीं है, उसका जो चढ़न है वो नहीं है यहाँ पे. सी, कब तक ज़ीरो रहेगा स्लोप. सी, यहाँ पे भी वो फ्लैट रोड पे ट्रैवलिंग कर रहा है. हियर अगेन स्लोप इज ज़ीरो, हियर अगेन स्लोप इज ज़ीरो. सी, अब वो नीचे आया. At that point your slope should be negative. At that point when he moves towards downhill, at that time your slope should be negative. And ये जो पोजीशन है यहाँ पे स्लोप क्या होता है, ज़ीरो. सो ये जो है this part is known as maxima. This part of that hill, particular hill, is known as maxima. means suppose मुझे डेरिवेटिव लेना है किसी चीज़ का, तो उसके दो पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू. सो मैक्सिमा जो आता है किसी भी कर्व के लिए, सपोज दिस इज माय कर्व, साइन, ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन. So this point is known as maxima and this point, values of this point is known as minimum values. Are this graph represents minima. Keep in mind this thing. यहाँ पे भी फ्लैट है तो स्लोप नहीं आएगा, यहाँ पे भी फ्लैट है तो स्लोप नहीं आएगा. यहाँ पे वो डाउन टुवर्ड्स डाउन हिल जा रहा है तो your slope should be negative at that time. See, now how it works, suppose that boy is standing here. Okay,
So when he is traveling via this road, so at that time we can find out slope by making chord, by making line on a chord. And Pythagoras, see, this is delta and it is symbol to represent change. It is symbol to represent change in variable. So delta represents चेंज इन वेरिएबल. सो स्लोप ऑफ कॉर्ड अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो आप लोगों ने ये पहले भी किया रहेगा. तो स्लोप ऑफ कॉर्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं? सपोज दिस इज माई कॉर्ड, मेक वन लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस कॉर्ड at a point, at a single point, and make a situation as like this Pythagoras, and you can find out your values of that slope. Now see, slope of tangent, जो लाइन कर्व से सिंगल पॉइंट में पास होगी वो हम टेंजेंट बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट. ना स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, विच वन इज टेंजेंट हियर? दिस वन इज टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है हम कैसे लिखते हैं? dy बाय dx. हाउ टू राइट? नाउ स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू चेंज इन एलिवेशंस. जो भी उसके अप एंड डाउन से उसमें जितने भी चेंजेस आए हैं, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन एलिवेशंस विथ रिस्पेक्टिव डिस्टेंस. तो ये हम फाइंड आउट करते हैं स्लोप कॉर्ड का. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट डेरिवेटिव हियर of the tangent line at that point is the slope of the hill before they actually. Small numbers are marked by the Greek letter delta. So delta is known as Greek letter and small numbers are marked by the Greek letter delta. Means जो change है, suppose मुझे find out करना है कि करंट पोजीशन वो बच्चे की क्या है, एंड मुझे ये भी फाइंड आउट करना है कि आफ्टर 5 मिनट्स वो बच्चे की क्या पोजीशन है, आफ्टर 10 मिनट्स बच्चे की क्या पोजीशन है, आफ्टर 15 मिनट्स क्या पोजीशन है, और आफ्टर 15 मिनट्स 1 सेकेंड क्या पोजीशन है. सो जैसे जैसा मेरा टाइम ड्यूरेशन कम होगा वैसे वैसे वो स्मॉल क्वांटिटी जो है डिस्टेंस का वो कम होता जाएगा. इजंट इट? सो चेंज इन एलिवेशंस with respect to change in distance, and this Greek letter we can write in the form of delta. See, अगर न्यूमरेटर में डेल्टा है तो डिनोमिनेटर में भी डेल्टा आएगा, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज इन, एंड इन प्लेस ऑफ डेल्टा यू कैन राइट, okay, you can write delta also in the form of as like this, delta y or delta x. Got it? This is another representation of delta. So slope of chord is nothing but in the form of delta is delta y over delta x, means change in y with respect to x. It means जैसे जैसे मुझे evaluation find out करना है, this one elevation find out करना है with respect to time or distance. So this is nothing but derivative. C, derivative of the displacement is the velocity. You know that? Suppose मैंने रॉकेट फायर किया, रॉकेट लॉन्च किया. सो applications for example with a rocket moves with displacement. रॉकेट कैसे जाता है? ग्रेविटी के अपोजिट में. तो उसके लिए क्या क्या लगता है? सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respective time, this is nothing but what? Velocity. This is my rocket. Rate of change of displacement with respect to time of that rocket is nothing but velocity. Now see applications here again with a rate of change of displacement. See, rate of change of displacement with respect to time velocity है, तो rate of change of velocity क्या है? See, रॉकेट का पोजीशन है अपवर्ड मोशन, ओके.
ds by dt is nothing but velocity. And what is mean by velocity? If I took velocity with respect to time, dv by dt, if I took dv by dt here, then I will get acceleration. Got it? So positive for upward motion and negative for downward motion. It is the path of velocity. Now see how to write velocity. What is mean by velocity? If I have ds by dt is velocity, then if I am going to take derivative of velocity, so what is meaning of this? Derivative is nothing but velocity. So you can write this is in the form of d2s by dt square. So it is known as second derivative. dv by dt is known as first derivative. So you can write velocity in the form of dv by dt, and if you have rate of change of velocity with respect to time, then you can write this is also in the form of d2s by dt square, and this is nothing but again velocity. And what is the value of this one? This is known as, see, d2s by dt square is velocity, and derivative, that is second derivative of s, and this is known as acceleration. Derivative of s, acceleration is caused by the firing of the rocket. जैसे हम रॉकेट को फायर करते वैसे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो वेलोसिटी के साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम रहेगा वो क्या रहेगा? एक्सेलरेशन. So you can see different examples. See, यहाँ पे एक बोट दिखाई दे रही है आपको. If you want to find out distance, what is aim here? By rope, a fisherman pull his boat, approaches the port. The rope movement rate of change is 3 meters per second when its length 25 meters. If the height of the rope that holds by the fisherman to sea surface is 9 meters, then freeboard of boat is 2 meters. Calculate how fast the movement of the boat. सीधा हमें फाइंड आउट करना है कि मूवमेंट कितना, स्पीड कितना है बोट का. स्पीड इज नथिंग बट पार्ट ऑफ कैलकुलस. सो यहाँ पे हमें ऐसे बाय यूजिंग पाइथागोरस यू कैन फाइंड आउट. ऊपर का हाइट मिला तो डेप्थ का भी हाइट हम कंसिडर कर सकते हैं. सो बाय यूजिंग दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बोट का पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टूवर्ड्स, see, by using this Pythagoras you can find out movement rate. See, again suppose a conical water tank है, उसका शेप कोनिकल शेप है, तो उसका भी हमें अगर कुछ फाइंड आउट करना है. फास्ट द वाटर डेप्थ इंक्रीजेस. हाउ फास्ट द वाटर डेप्थ इंक्रीजेस when the water depth is 16 meter. So you can find out this is again by using this calculation, and this is nothing but volume and rate of change of volume with respect to time. What is this? This is known as derivative. Now move towards functions. अब हम आते हैं 11th स्टैंडर्ड में. फंक्शंस अब तक का जो मैंने दिखाया आपको एग्जांपल्स वो आपके 10th स्टैंडर्ड तक हो चुका है, बट 11th स्टैंडर्ड में अगर फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हैं तो उसको एक नए तरीके से डिफाइन करना है. ठीक है. सो इफ यू हैव एनी फंक्शन, व्हाट इज दिस? स्क्वायर फंक्शन. So see, if you have value of x is 2, it is independent variable. X is known as independent variable here, and x square is nothing but y, which is dependent. इंडिपेंडेंट x है, एंड x स्क्वायर जो y के फॉर्म में f ऑफ x के फॉर्म में आएगा, दैट इज नोन एज I'm writing here square function.
x is known as independent, y is known as dependent. Okay, and this is known as y. So if my x is 2 here, at the same time my y is x square, it means 4. 2 square 4. So see, if this is my x which is 2, I got y 4. If this is my minus 2, I got 4. Okay. Now see, this is how to find out derivative. So इसका जो डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं, we can see in the next part of this practical. This is our part 1 for this practical, which is on the basis of very basic concepts. Now first, before starting of differentiation, you have to know that what is mean by limits, what is mean by continuity, and then we will move towards differentiation in the next part. Okay, thank you students.